Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My dear friends and fellows and students and colleagues, today we will talk about the megaloblastic anemias. When I am doing it as a facilitator here, Professor Dr. Sayyid Ali Adar, and I am representing as a visiting professor of medicine at Jinnah Sindh Medical University. I'm continuously taking the lecture all lines. Previously I have talked about the interpretation of the CBC, how will you go for the diagnosis, and then I have taken a case of iron deficiency anemia. So for the help of the complete blood count, we can go for the differential diagnosis of the anemia if the patient is anemic, or if the patient is not anemic, but the RBC parameters, they are disturbed. Both conditions are important. Now here it is the case which we are actually discussing, the megaloblastic anemias, when you will suspect the patient has got the megaloblastic anemia. When the hemoglobin is reduced, or the RBC count is reduced, or the hematocrit is reduced, it may be mild, it may be moderate, but not severe. Severe megaloblastic anemias are usually not presented. Before they are presenting as anemia, the other symptomatologies, clinical symptoms are produced, and the clinical presentation are different than the other anemias. And clinical examination, you can pick up the characteristic feature of the megaloblastic anemias. The megaloblastic anemia is the terminology which is using by the histopathologist or hematologist, because they will go for the bone marrow examination, where the megaloblasts, that is immature RBCs, are found, erythroblast or hematoblast, etc. Proerythrocytes, the size are more, or the very young RBCs, reticulocytes, etc. So the MCV in this condition is increased, should be increased. Before the development of anemia, even the MCV will become increased and the patient may become symptomatic. This is the important point. So MCV will increase in this case. The MCHC or MCH will not be disturbed in most of the cases. A case report like this, you can understand by this example, that a 15-year-old boy on a vegetarian diet presented with a severe macrocytic anemia. And macrocytic anemia means that you are reporting the CBC. You are examining the peripheral blood film. From the peripheral blood film, if the MCV is increased, this is called macrocytosis or macrocytic anemia. Or if you are examining the bone marrow and you are diagnosing it, it is called megaloblastic anemia. So the megaloblastic anemia means macrocytic anemia. Severe macrocytic anemia, hemoglobin is 5.1. Although it is a rare case, as your case presentation. Although usually it is not so much lower down. Before it is lower down, the clinical symptomatology will appear and the patient will come to you. The MCV is 116 centiliter. Normally it is about 95. 96 in our country, and in other countries the alcoholism is there, it is 105, it is 116. In addition to leukopenia is also there, and thrombocytopenia. Means there is a pancytopenia, but not severe leukopenia and not severe thrombocytopenia. Icterus is slightly icteric, secondly to the hemolysis, because of the mature cells' life are very, very
low, and the splenomegaly, and there will be splenomegaly. So splenomegaly will be there in this case, because to compensate, the reticuloendocrine system will become hyperactive and there will be splenomegaly. Splenomegaly doesn't mean hypersplenism. Hypersplenism means that the activation of the red pulp and the white pulp, and then there is destruction of the cells. So there will be definitely element of the hemolysis. So splenomegaly is there. Even liver may be large. Even liver neuropathy may be there. Laboratory investigation revealed severe vitamin B12 cobalamin deficiency. Serum B12 level in our country, which is we are doing here, is around, it should be less than 200 to diagnose it. Otherwise, in other countries is 210, for example, to diagnose the cobalamin deficiency from the serum side is concerned. It is not a confirmatory test. Following cobalamin replacement therapy, the patient reported increased well-being, including the appetite and the weight gain, and his serious resolved. In the follow-up lab examination, leukocyte and platelet count, in addition to the serum bilirubin and the LDH levels, are normalized. At the end of the 2 months, lab findings, including the hemoglobin level, were all within the normal range. After this therapy, the patient will become fine. What is the cause behind it? In this condition, because the patient is strictly vegetarian, he is not taking the required amount of the cobalamin. Vegetable, actually very low amount is present, hardly. It is the animal origin diets which will give you vitamin B12. Even the milk will give you very low amount of the B12 levels. The requirement for the red cell production is erythropoietin will be there. Proteins to be required for the globin synthesis, the iron, vitamin B12 and folic acid, vitamin B6, pyridoxamine, vitamin C. Look, this is essential because of the conversion of the ferric to the ferrous, and thyroid hormones are also the homeopathic factor. Estrogens enhance the erythropoiesis, and androgens. The most powerful agent for the red cell production, most powerful stimulus is hypoxia. Remember, hypoxia is the most powerful stimulator of the hematopoiesis. Vitamin B12 and the folate affects the deficiencies in both of them. The megaloblastic anemia or macrocytic anemia will be there accordingly. Sore tongue, abnormal gut mucosa, both are may be involved. Demyelination in the CNS, in B12, not in the folic acid. The peripheral nervous system will be involved. Even the central nervous system may be involved, because myelin needs the normal B12 levels. Even every cell needs B12 levels, I will say. There will be hyperhomocysteine. This is very important. It is a risk factor of ischemic heart disease nowadays. It will increase the clotting time. It can enhance the thrombosis, the hyperhomocysteinemia, and this is the dangerous important point. And another agent in cases of the B12 and the folate both will cause the hyperhomocysteinemia, but methylmalonic acid or increased amount of the methylmalonic acid will cause, in cases of only be seen in cases of the B12, specifically B12. This is the base of the understanding of this problem. The megaloblastic anemia, hemoglobin production probably normal. Production is normal, but there is defect in the nuclear replication and division. That's why the cell size is increased, and there will be a hurry phenomena. But it affects all marrow elements. It will affect all even the cells
of the body because they need it. Look, the homocystoblast will convert to the pro-erythroblast, to early erythroblast, and the late erythroblast and the normal blast, the reticulocytes and erythrocytes. Now here you need it. This is the point. After stem cell, the homocystoblast, a committed cell is pro-erythroblast. Here you need, from there, you need vitamin B12 and folic acid for the normal production of the RBC. The megaloblastic anemia trademark cell is the oval type of macrocyte, not rounded. MCV is more than 120 liter. Hypersegmented neutrophils, 98%. Hypersegmented. You see the segmentation are there in the neutrophils. There will be a picture of pancytopenia, especially if anemia is severe, although in most of the cases patient present before it appears. There will be retrocytopenia in these conditions, where because the reticulocyte depends on the production, depend on the normal amount of the B12 level or folic acid levels. Therefore, initially there will be deficiency of the reticulocyte. LDH level is elevated because of the cells which are destroying. You are destroying the cell LDH1, LDH2, LDH3 isoenzymes. From the different parts of the body they are arising, and because of the destruction of the immature cells, the LDH level is elevated. Serum iron normal. It may be elevated because of the high requirement, but serum B12 or folate low. Marrow, classical you will find in this film. If you film the marrow examination, you will see a big cells there from all series, specifically speaking the erythropoietic series. The macrocytic anemia with hypersegmented neutrophil. This is a classical picture of the deficiency of these vitamin B12 and folic acid. There is macroovulocyte in the megaloblastic anemia, ovulocyte, oval-shaped cells. And the macroovulocyte in megaloblastic anemia, big cells they are. And look the shape of it. Bone marrow, you see the big cells, all immature cells with nucleated RBC, which you can see. Megaloblasts, big cells, and there are a lot of nuclear material is present. Here is the peripheral film of the marrow. You see the big one here. Big cells, they are stained with the hematoxylin, and then eosinophilic material is present inside the RBC. Now, every cell needs the vitamin B12, including marrow. It is important for metabolism and formation of the red blood cells and maintenance of the central nervous system, as well as the peripheral nervous system, including the brain and the spinal cord. So all of the system of the body is involved, specifically speaking, the nervous system, central and peripheral. Both are involved, and the patient may present in the different ways. Now here we see cobalamin. Cobalt is a substance, the central here. This is the structure. Colin ring, this is called. And dimethyl benzimidol ligand is this one, and this is the linker chain and side chain. This one. This is the structure. Biochemistry of this B12 is that actually the homocysteine, which should be converted to methionine. And on the other side, the methylmalonic coenzyme A, which should be converted to the succinylcholine CoA. If these are formed, they are important for the DNA synthesis, nervous tissue, and fat metabolism in the liver. While the other part here, which is seen on the right side, is the intermediate of the citric acid cycle, fat citric acid cycle. The porphyrin formation, heme synthesis occur in this fashion. You will find here the B12 is needed and folate is needed in the homocysteine conversion to the methionine. Here in this condition on the other chain, only B12 is needed.
in a triple-acidic acid cycle. Methyl malonic coenzyme A mutase will be converted. It is an enzyme with the B12. It will cause the formation of succinyl-CoA, and then it will go into the cycle, the triple-citric acid cycle, tricarboxylic acid cycle, etc., etc. And many names of this cycle, and it is the main pool of the metabolism. Now remember this and this, both are needed. Methionine as a substrate and succinyl-CoA as a substrate. Desynthesis and B12 and folate, that is called methyl folate trap. Now, between the DNA synthesis and vitamin B12, folate is very, very important substance. Now, homocysteine is converting into the methionine. Okay, it needs, I say, the B12, as I said previously. Here you need it. But there is a methyl folate is also entering into this, and it will go into the folate pool as DNA will be formed afterwards. But this is needed. It is formed, no doubt. But it is not forming. Actually, the DNA synthesis, which is needed in the body, always needed in the body, because there is a ton of the cells. Old cells are died and the new cells are forming. This is a pool where methyl folate is going with the help of this homocysteine in converting homocysteine is also needing here in the folate pool. So if you give, in the absence of the B12, if you give the folate will go into the pool, and it will go into the folate pool, but methionine is not forming. So you will go for the DNA synthesis already, no problem. But methionine is absent. Rather, it will more decrease, because it will conversion is rather decreased. So if you are giving the folate in B12 deficiency, only folate, the CNS symptoms will be worsened because of this pool, because all the cycle is busy in production of this, rather going to this. The methionine is rather more deficient, and more deficiency means more CNS symptoms. So folic acid in B12 deficiency specifically will increase the CNS symptoms of the classical B12 deficiency. Dietary B12 and its absorption, that you have to divide it, that you have to take it from the what is called as the animal is the main source of it, and it will drive mostly from the animal source. Mostly. It is in the stomach. It needs intrinsic factor which are secreting from the parietal cells. The intrinsic factor will combine with the intrinsic factor. There will be another protein which is called gastric R binder, which also communicate with it, helping this complex to go out from the pylorus into the duodenum. Now the R binder will be released. Now uska kaam khatam ho gaya. Only intrinsic factor is combined with this. Because this complex then goes to the terminal portion of the ileum, which is called the intrinsic factor dependent cells at the terminal ileum. Here the intrinsic factor is detached now, and the B12 is absorbed. Its requirement mean is 2.5 microgram per day only. But if you store into the liver, so it will cause its storage capacity is much. Even after 4 to 5 years, they said the deficiency appears if you are strict vegetarian, specifically zero vitamin B12 has been taken last 3 years.
the symptoms appear after 3 to 5 years because the store is present in the liver. In the folate, it will appear in a few days, or a few weeks, rather, I would say, on a few months, the symptom will appear. On a B12, no. It will take much time, 3 to 5 years. Sources are there, main sources are this one. Milk, पाकिस्तान में तो असली दूध मिलते ही नहीं है. फिशेज है, बीफ है, फिर इससे ड्राइव एग्स हैं, ये एनिमल सोर्सेज हैं, सारे एनिमल सोर्सेज. लेकिन में वेजिटेबल वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है. जो भी ड्राइव हुए मिल्क से ड्राइव कर रहे हैं आप, या एग से ड्राइव कर रहे हैं. पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, ईट एग्स है, मीट है, इनसे मिलता है. लेकिन वेजिटेबल से नहीं मिलता, सीरियल्स में नहीं मिलता, ये बहुत कम होता है. आपको बहुत ज़्यादा सीरियल्स और वेजिटेबल खाने पड़ जाएंगे, या पल्सेस दालें वगैरह खानी पड़ेंगी, तब जाके रिक्वायरमेंट पूरी होगी. लेकिन इतना खा ही नहीं सकते आप. अगर एक एग खा लें उसकी जगह, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा. ये वो साइकिल है जो मैंने अभी बताई है कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन हुआ इसका, और टर्मिनल आलिया में एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर ये पोर्टल सिस्टम में आएगा, लिवर में चला जाएगा, और वहाँ फिर इसके बाद वही साइकिल जो मैंने मिथेनाइन वाली बताई थी और दूसरी सक्सराइल वाली बताई है, ये वहाँ पे कन्वर्जन होगा इसका. सारा का सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है. बहुत डिटेल में जो है ना विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को डिस्क्राइब किया गया. इसके अंदर बहुत डिटेल अकाउंट जो है ना वो आपको दिखाया जा रहा है, जो अभी बात हो रही है. तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है ना वो सारी की सारी चीज़ें चाहिए अगर विटामिन B12 से बचना है. कि आपको जो है ना डाइट चाहिए, उसमें B12 चाहिए, गैस्ट्रिक आर बाइंडर चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए, स्टमक के अंदर जो है ना वो नॉर्मल मिकोजा चाहिए, फाइबर उसको खुला चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए. यहाँ पे भी एंजाइम्स चाहिए ताकि डिटैच करें आर बाइंडर को. आर गैस्ट्रिक बाइंडर को डिटैच कर देंगे तो ये नीचे आएगा. और यहाँ पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ये टर्मिनल आलियन तक पहुँच जाएगा, और वहाँ पे जो है ना मिकोजा पे इंट्रिंसिक फैक्टर डिटैच हो जाएगा, और B12 इसके अंदर चला जाएगा पोर्टल वेन में, वह कन्वर्जन शुरू हो जाएगा. यहाँ पे ट्रांसकोबलामिन 2 ये एंजाइम है जो कि कंबाइन कर रहा है, B12 को ले जा रहा है कैरियर प्रोटीन में. ट्रांसकोबलामिन 2 होता है, ट्रांसकोबलामिन 3 भी होता है, तो वो चला जाएगा. इसको बहुत डिटेल के अंदर फिर सेल के अंदर जो है वो मैंने पहले भी बता दिया था आपको. लेकिन अगर आप ड्यूनेलम में देखें या आलियम में देखें, तो ये फिनोमेना इसके अंदर जो मैंने डिस्क्राइब किया अभी वो यहाँ पे दिखाया गया है. इसकी कॉजेज ये है कि गैस्ट्रिक फेलियर, पर्निशियस एनीमिया. गैस्ट्रिक फेलियर अगर है तो पर्निशियस एनीमिया होगा, या टोटल गैस्ट्रिक्टमी में जो है ना गैस्ट्रिक फेलियर में, यानी स्टमक जो है ना फेलियर हो गया है. आपने कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर तो सुना होगा, गैस्ट्रिक फेलियर की टर्मिनोलॉजी नहीं सुनी होगी. ये पर्निशियस एनीमिया में होता है जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है. ये टोटल गैस्ट्रिक्टमी है ही नहीं, स्टमक ही नहीं है, या आपने उसको बहुत स्मॉल कर दिया है, 2/3 स्टमक को आपने उड़ा दिया है उठा के. इसमें तो फिर सारे जो फैक्टर हैं जो ज़रूरी हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर इज मिसिंग एंड कॉम्बिनेशन इज गोइंग, नहीं जाएगा, कॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, तो कंबाइंड कॉम्प्लेक्स आपको मिलेगा नहीं इसमें. या इलियम फेलियर, ये टर्मिनोलॉजी भी देखिए ज़रा, ये फेलियर की टर्मिनोलॉजी है. क्या है? इन क्रोन्स डिजीज रीजनल एंटेराइटिस. रीजनल एंटेराइटिस होता है इसके अंदर. इसका स्मॉल इंटेस्टीन का जो इलियम का पार्ट है, लास्ट 1/3 वो इन्वॉल्व हो जाता है. या इलियम रिसेक्शन हो जाए, या ट्रॉपिकल स्प्रू क्या चीज़ होती है, इसके अंदर एटलीस्ट 2 जो है मेन जो है वो आपके पास जिसको आप कहते हैं सब्सटेंसेस, मैक्रो जो सब्सटेंसेस हैं वो डेफिशिएंट हो जाए. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं और लिपिड्स हैं. ये 3 मैक्रो कंपोनेंट्स हैं डाइट के. उनमें से अगर 2 जो हैं वो नहीं हो तो उसको कहते हैं ट्रॉपिकल स्प्रू. ठीक है ना. खाली लिपिड लॉस हो जाएगा तो स्टिटेरिया हो जाएगा. ये टर्मिनोलॉजी भी याद रखिएगा. और स्प्रू है किसी को तो वो इतना तेज़ होगा कि वो
करने ही नहीं देगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपीटिंग ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, जैसे ब्लाइंड लूप सिंड्रोम कहते हैं आप, जो कि एक्वायर्ड होता है। कहाँ पे? एक्वायर्ड ब्लाइंड लूप सिंड्रोम जो होता है वो ज़्यादातर, देखिए यहाँ पे ये सारा मैकेनिज्म भी बता रहे हैं, बाकायदा ये डायनेमिक बताया जा रहा है। अब हाउ इट इज़ एब्जॉर्बिंग हियर। अब यहाँ पे एंड आ गया ये बिल्कुल। वहाँ पे जो है ना, अगर एक्वायर्ड है ब्लाइंड लूप, तो चलो ये सर्जरी से आपने किया था, बिकॉज अल्सरेटिव कोलाइटिस था, या किसी को रिसेक्शन करके आपने इलियोलिग्योस्टोमी कर दी और वगैरह वगैरह वगैरह। एक्वायर्ड जो होता है वो उन कंडीशन में होता है जिनका स्टेसिस हो जाए, और वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसके अंदर जो है वो एक्वायर्ड ब्लाइंड लूप या बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर compete करते हैं वो B12 के साथ और एब्जॉर्ब नहीं होने देते। दूसरा ये कि एक जो है वो टेप वॉर्म है, जो कि पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन मलेशिया में, और इससे जो ये बेल्ट जा रही है सारी, वहाँ पे होता है डेफिब्रिलेटम। ये फिश टेप वॉर्म है, ये बहुत बड़ा होता है। इससे बड़ा वॉर्म ह्यूमन में नहीं दरियाफ्त किया गया। ये जो होता है 3 से 5 मीटर तक होता है, इतना बड़ा होता है ये। यानी इसको आप खींचें अगर एनस से, तो ये खिंचता चला जाएगा, ये ख़त्म ही नहीं होता ये। और आपकी जो पैथोलॉजिकल लैब्स हैं यहाँ पे रखे गए ना म्यूज़ियम, उसके अंदर ये दिखाया गया है। तो यहाँ पाकिस्तान में इतना होता नहीं है, लेकिन कोई बाहर से आया है तो सस्पेक्ट किया जा सकता है। वो क्या कि कोई चीज़ निकलती है, मैं हाथ से फेंक करके तोड़ देता हूँ, पखाने वाली जगह से निकलती है, तो वहाँ पे जो है ना ये चिपक जाता है इस जगह पे, और वहाँ पे ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो कॉजेज ऑफ विटामिन B12 डिफिशिएंसी ये है कि इनएडिक्वेट इंटेक हो, या वीगान्स, प्योर अगर वेजिटेरियन है कोई, हिंदूज जो है ना, उनमें जो ब्राह्मण जात है खासतौर पे, वो बिल्कुल प्योर वीगान्स होती है, वो खाते ही नहीं है। या वो लोग हैं, ऐसे भी मौजूद हैं जो कि हिंदू नहीं है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो उनकी जो होती है वो एनिमल सोर्स होता है। फिर एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ब्लाइंड लूप सिंड्रोम है, ट्रॉपिकल फ्लू है फॉर एग्जांपल, या और कोई मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर है जिसमें हरी सिंड्रोम है, इतना टाइम ही नहीं दे रहे कि एब्जॉर्ब हो। फिर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी हो सकती है, जो ऑटोइम्यून डिजीज है, पर्निशियस एनीमिया है, एडिसोनियन पर्निशियस एनीमिया। एंटी पैराइटल सेल एंटीबॉडीज़ बनती हैं, पैराइटल सेल या एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और उसके बाद जो बीट ज़ाहिर ना इंट्रिंसिक फैक्टर मिला ना आपको, B12 तो मिला, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला। तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिला तो पर्निशियस ज़ाहिर है फिर वो एनीमिया हो जाएगा। ये एनीमिया चूँकि ऑटोइम्यून नेचर का है, ये बॉडी पर इफेक्ट करता है ज़्यादा, और ये CNS को खासतौर पर इन्वॉल्व करता है। इन फैक्ट दी अदर पार्ट्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। इट मे बी पार्ट ऑफ द पॉलीग्लैंडुलर टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज टाइप, जैसे 1 है या 2 है, उसमें पर्निशियस एनीमिया पॉसिबल हो सकता है। गैस्ट्रेक्टमी है, किसी की कर दी गई है, अडल्ट हैं मिसाल के तौर पे, वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकता है। अल्कोहलिज्म भी इसको इन्हांस करता है। इन्हें स्पेसिफिकली इन्होंने जो अलग करके बताया है हमने, वो पर्निशियस एनीमिया, जिसको नहीं पढ़ाया जाता, वो एडिसोनियन पर्निशियस एनीमिया। Autoimmune destruction of the parietal cells, antibodies are produced versus parietal cell और इंट्रिंसिक फैक्टर। एक और हार्डिया इसके अंदर यूनिवर्सल है, क्योंकि पैराइटल सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। वो लोग जो कि ड्रग लेते हैं सप्रेसर्स, एच2 रिसेप्टर ब्लॉकर ले रहा है कोई आदमी बहुत अरसे से, या कोई PPI ले रहा है बहुत अरसे से, उन दोनों कंडीशन में मैकालोब्लास्टिक हो जाएगा। जब मैकालोब्लास्टिक हो जाएगा यानी आपने एक्चुअली पैरेलल सेल को सप्रेस किया है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर भी सप्रेस हो जाएगा। बहुत प्रोलॉन्ग थेरेपी है, तो वहाँ पे भी फिर ये हो जाएगा, सेम सिम्टम्स डेवलप हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट कर जाएगा। इंसिडेंस इनमें गैस्ट्रिक कैंसर का इंक्रीज हो जाता है, कार्सिनोमा चांसेस आर मोर, दे आर मोर सीन इन अमेरिकन ब्लैक्स एंड नॉर्थर्न यूरोपियंस। ऑल्दो इन आवर कंट्री आई हैव सीन ओनली 2 केसेस इन माई लाइफ। पर्निशियस एनीमिया के 2 केसेस मैंने देखे हैं बस, लेकिन पॉलीग्लैंडुलर ऑटोइम्यून डिजीज के साथ देखे हैं, अदर इम्यून डिजीजेज हैशिमोटोस थायराइडिस के साथ भी देखे हैं मैंने, और एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के साथ देखे हैं मैंने, ये केसेस देखे हैं। लेकिन
ये जो है आइसोलेटेड पर्नीशियस एनीमिया सिर्फ 2 केसेस मैंने देखे। पर्नीशियस एनीमिया आप देखेंगे कि अर्ली ग्रेइंग हो गई है पेशेंट की, आइस जो है अगर ये ब्लूइश टिंज आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, बिकॉज ये आयरस को भी चाहिए B12, स्लाइट ब्लू आपको आई मिलेंगी इनकी, एनीमिया मिलेगा पेशेंट को, और ग्रेइंग ऑफ द हेयर जैसे मैंने बताया बहुत अर्ली ग्रेइंग हेयर, रेड बीफी टंग, लुक दिस टंग इतनी है कि जब बीफ जैसे काट के अगर मैं कट सेक्शन में दिखाऊं तो इट इज जस्ट लाइक अ बीफ। और फिर सोरनेस से डेवलप हो जाएगी। यहाँ पे आप देखें ना, जब आपने पहले ही उड़ा दिए टंग के, फिर डायरेक्टली एक्सपोजर करा आपने तो कोई भी चीज़ लगेगी जाके तो उसमें पेन होगा फिर उसको। इसी तरीके से पर्नीशियस एनीमिया है तो उसके साथ विटिलिगो एसोसिएटेड होता है अगर ये ऑटोइम्यून डिजीज थी। इस तरह इसमें नॉर्मल है, इसमें गैस्ट्रिक एट्रोफी इज सीन इन पर्नीशियस एनीमिया। एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, इट इज गैस्ट्राइटिस विच इज सीन इन केस ऑफ दिस। एक होता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस ए होता है, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बी होता है। अब क्रॉनिक जो गैस्ट्राइटिस है वो खुद भी ये प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। ख़ास तौर पे जो है ना वो बी वाला जो है जिसमें एच पैलोराई एसोसिएटेड होता है उसमें भी एट्रोफी हो जाती है। अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो जाए तो उसमें भी फिर यही एट्रोफिया डेवलप हो जाएगा और फिर वही सिम्टम डेवलप शुरू हो जाएंगे। पर्नीशियस एनीमिया नॉर्मल, ये देखें स्टमक है, ये पर्नीशियस एनीमिया है। नॉर्मल स्टमक में जो है ना वो इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए था, एसिड इसको चाहिए कन्वर्जन के लिए, और गैस्ट्रिक बाइंडर चाहिए था, तो नॉर्मल गैस्ट्रिक पैरालिसिस ऐसे है। इसके अंदर एट्रोफी हो गई है स्टमक में, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो गया है, कॉलोहाइड्रिया हो गया है, नो इंट्रिंसिक फैक्टर। दिस इज इन द पर्नीशियस एनीमिया। टोटल डिस्ट्रक्शन भी हो जाती है बहुत दफ़ा। ये तो खाली एट्रोफी हुई है, लेकिन टोटल डिस्ट्रक्शन अगर सीवियर है ऑटोइम्यून नेचर की डिजीज तो ये डिस्ट्रॉय कर देगी। इसमें जो है ना वो एक ज़माने में शिलिंग टेस्ट करते थे। पहले वो क्या करते थे कि B12 लगाते थे, और ये है क्या आइसोटोपिक B12, ये एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन में, तो यूरिन में उसको चेक कर लेते थे। अगर B12 एक्सक्रीट हो गया तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या करते थे कि पार्ट 2 में इंट्रिंसिक फैक्टर भी के साथ देते थे। पार्ट 2 में इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ देते थे, और पार्ट 3 में आफ्टर जो है वो एंटीबॉडीज देते थे। तो पर्नीशियस एनीमिया में तो ये होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ही कम होता है, तो नॉर्मल पार्ट 2 विद इंट्रिंसिक फैक्टर, ये लो है पार्ट 1 विदाउट इंट्रिंसिक फैक्टर। शिलिंग टेस्ट जो है तो विद इंट्रिंसिक फैक्टर नॉर्मल हो जाएगा वो, अदरवाइज लो रहेगा। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ में लो होगा। पार्ट 2 अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ आपने इसको शिलिंग टेस्ट किया है तो लो होगा, और आफ्टर गिविंग दी एंटीबॉडीज स्पेसिफिकली एंटीबॉडीज दे दी आपने तो उसमें भी वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन इलियल डिस्फंक्शन जो है ये पार्ट 3 सॉरी ये आफ्टर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। ये आपने जो है स्टमक से और वहाँ से लेके और इलियम तक एब्जॉर्प्शन, आई एम सॉरी, इलियल डिस्फंक्शन में लो होगा, एवरीथिंग विल बी लो, बिकॉज एक एब्जॉर्प्शन भी ख़राब है आपकी, फैक्टर का होना ना होना बराबर था, उसको कोई फ़ायदा नहीं था। तो ओरल भी इसको देख के देखते हैं और इंटरवेनस भी देख के देखते हैं। इसीलिए पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है। अब आजकल ये नहीं करते क्योंकि इसमें इसको करना आसान काम नहीं है। पेरिफेरल मैनिफेस्टेशन क्या थी इनकी, विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल, फॉलिक एसिड में भी होती हैं, और ड्यू टू द इंट्रासेलुलर फॉलिक डेफिशिएंसी, बिकॉज की साइकिल दोनों को जो कॉमन पूल है फॉलिक पूल कहलाता है उसको भी उसके अंदर जारी इसका काम है बहुत बड़ा। देयर विल बी स्टोमेटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिप्स, पेरिफेरल जो है ना जो पार्ट है उसके लिप्स के, एंगुलर स्टोमेटाइटिस जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे जो है ना स्टोमेटाइटिस हो जाता है। टोटल भी हो सकता है, लिप्स आर इन्वॉल्व। देयर विल बी ग्लोसाइटिस हो सकता है, बक्कल म्यूकोसा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, देन इसके अंदर वो भी इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। ब्लीडिंग भी हो सकती है, और GI म्यूकोसा अल्टरेशंस हैं इसके अंदर,
ये पेरिफेरल मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी B12 चाहिए आपको, उनको भी एट्रोफी हो जाएंगे। कैन करेक्ट ऑल ऑफ द अबव विद हाई डोज फॉर नो, ये करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। इसलिए कि जो पेरिफेरल सिम्टम्स हैं इन B12 डिफिशिएंसी में अगर फॉलेट दे दी जाए, वो सारी की सारी कन्वर्जन जो है कि सक्सेनाइल को ए में चली जाएगी, और मिथनाइन जो है जो कि ज़रूरी है CNS के लिए, वो कम हो जाएगा। उसको इसलिए इसमें नहीं देते। कोवलेंट डिफिशिएंसी अगर किसी को है स्पेसिफिक, तो उसमें फॉलेट जो है ना वो नहीं देते। अगर आपको देना ही है, तुक्का मारना है, तो कोबलामिन के साथ दें, वरना पेरिफेरल सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे। सेंट्रल मैनिफेस्टेशन में जो है ना बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी इन्वॉल्व, देयर विल बी डिमेंशिया, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के साथ मैंने केसेस देखे हैं, डिमेंशिया से मैंने देखा हुआ है। डिमाइलिटिंग डिजीजेज हैं स्पाइनल कॉर्ड में, लॉस्ट ऑफ द पोस्टीरियर एंड लेटरल कॉलम्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉलम में क्या है, ज़्यादातर जो कॉलम है उसके अंदर जो है वाइब्रेशन सेंस और दूसरी सेंसेस हैं, डोर्सल कॉलम जिसे कहते हैं। लेटरल कॉलम्स में आएंगे तो फिर वो आपकी पेन सेंसेशंस हैं, टच सेंसेशंस हैं। इसलिए दो कॉलम जाते हैं, इसलिए कंबाइंड सिस्टम डिजीज कहते हैं। सब एक्यूट है ये डिजीज, तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसका नाम इसलिए रखा गया है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज स्टेबलाइज विद द ट्रीटमेंट बट नॉट रिवर्स्ड। एक्चुअली ये माइलिनेशन चाहिए इसको, तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो आप कर देंगे मैनेज, रिवर्स नहीं कर सकते इसको। अगर कोई एंड ऑर्गन डैमेज हो गया इसकी वजह से, तो फिर तो वो वापस नहीं हो सकता। वीकनेस रहेगी, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को बाद में भी रहेगी, लेकिन उनकी जो है ना पेन सेंसेशन अच्छा हो जाएगा, टच सेंसेशन अच्छा हो जाएगा, वाइब्रेशन सेंस अच्छा हो जाएगा, डीप सेंसेशन बेहतर हो जाएंगे। ट्रीटमेंट विद फॉलेट डज नथिंग फॉर एनर्जी, इट विल वर्स, ये वर्स कर देगा। अब इसके अंदर एक केस जैसे बताया गया कि सोलोन टेंडर टंग थी उसकी, और पैरास्थीसिया था, बहुत फीट का डिक्रीज इसके प्रोप्रिसेप्शन थी, वाइब्रेशन सेंस लॉस हो गई थी, अटैक्सिक गेट था, लेग की वीकनेस थी। उसमें इन्होंने बताया कि पोस्टीरियर कॉलम और लेटरल कॉलम जो है वो दोनों के अंदर इन्होंने स्टेन किया है इसको, और ये आपको बताया है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होती है लेटरल कॉलम में और पोस्टीरियर कॉलम में। तो सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन, सब एक्यूट है कंडीशन, और कंबाइंड है ये लेटरल कॉलम एंड डोर्सल कॉलम विल बी गॉन। कोवलेंट डिफिशिएंसी यूजुअल सीक्वेंस इवेंट क्या है, देखिए पहले सीरम होमोसिस्टीन एंड मिथाइल मेलानिक एसिड जिसे मैंने कहता वो बढ़ जाएंगे, और दोनों जो है वो क्या है, ये थ्रोम्बोटिक एजेंट हैं, ये थ्रोम्बोसिस को इंक्रीज कर सकते हैं, प्रो थ्रोम्बोटिक इनका इन्हांसमेंट है। सीरम कोबलिन के लेवल आप कराएंगे वो कम मिलेंगे, आप इससे पहले ये बढ़ चुका होगा, बाद में ये कम होगा, फिर MCV राइजेस होगा, न्यूट्रोफिल डायवर्सिफिकेशन होगी, फिर MCV जो होता है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर एनीमिया आएगा, डेवलप आपको मिलेगा एनेमिक पेशेंट, फिर वो सिम्टम डेवलप होना शुरू होंगे जो मैंने जिनकी बात की, सोलनेस वगैरह वगैरह, पेरिफेरल सिम्टम्स। तो इसको जो है ना अगर आप करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं ना अगर केस को, इस तरह से तो आपने डायग्नोज कर दिया, लेकिन इसकी जो है मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आपको कोबलामिन को रिप्लेस करना होगा, और आपके पास जो एजेंट है, चॉइस है, वो है कोबलामिन 100 माइक्रोग्राम कोबलामिन पर डे आपको देना है फॉर अ वीक। अब पाकिस्तान में जो है ना वो विटामिन B12 इंजेक्शंस दस्तियाब हैं, और दूसरे जो है हम ज़्यादातर जो लगाते रहते हैं, जो आपको पता हैगा, जो हम ज़्यादातर जो लगाते हैं वो प्रिकर्सर लगाते हैं इसका, सिंथेटिक, और वो भी यहाँ अवेलेबल है, जो कि बहुत कॉमन है, जो हम लगाते हैं इसको इंजेक्शन जो है इंजेक्शन फॉर्म में। तो वो लगाने से बेहतर है कि डायरेक्टली हाइड्रोक्सीकोबलामिन दे दीजिए, इंजेक्टेबल फॉर्म में दें इसको, ओरल फॉर्म में ना दीजिए। मिसाल से इंजेक्शन न्यूरोबियन जो है, अगर वो कोई लगा रहा है तो हफ्ते में उसको 2 दफ़ा लगाएं इसको पहले, तो एक हफ्ते में, 1 महीने में 8 हो गए, फिर वीकली लगाएं इसको,
फिर 2 वीकली लगाएं इसको, और फिर मंथली लगाएं इसको फॉर 4 to 5 months तक लगाते रहें इसको, तब जाके डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। ये जो पार्ट है जो अभी मैंने अर्ज किया आपसे, ये जो पार्ट है इसमें यह कि डेफिशिएंसी को रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से हुआ है। जो सेकंड पार्ट इसका बताया जाएगा बाद में आपको, वो फॉलेट एसिड डिफिशिएंसी या फॉलेट डिफिशिएंसी से होगा, जो बाद में बताया जाएगा। मैंने आपको मैनेजमेंट में भी बता दिया, यू हैव टू रिप्लेस इट, विटामिन रिप्लेसमेंट शुड बी ट्रीट द प्राइमरी कॉज। अगर प्राइमरी कॉज मिलती है तो रिमूव करें इसको और फिर इसको रिप्लेस करते हैं। बाद में डाइटरी को एडवाइस दें कि भाई आप हफ्ते में 1 मरतबा तो आप एनिमल प्रोटीन लो, थोड़ा खाएं, आप 100 ग्राम खाने चले, लेकिन वो खाना ज़रूरी है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। अगर वो नहीं खा सकता, मजहबी नौइयत की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर इंजेक्टेबल आपको देने होंगे। कोबालिन के इंजेक्शन आते हैं, टैबलेट्स आती हैं, वो आप चलो दे दें उन लोगों को जो लोग मतलब नहीं खाते, एनिमल सोर्सेज को ज़ीरो करते हैं, उनको रिप्लेस करें आप, या पास्चराइज करें मिल्क को। आप ये कर सकते हैं, इनके नहीं, और तो कुछ नहीं कर सकते। अब जिसको पर्निशियस एनीमिया हुआ है तो वो तो ऑटोइम्यून डिजीज है, उसको तो मैनेज किया जाएगा अकॉर्डिंगली। अब जिसके अंदर दूसरी कंडीशन है, जैसे पैरासाइट इन्वॉल्व था कोई, उसको आप मैनेज करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगी। या वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो है वो मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो मैल एब्जॉर्प्शन की प्राइमरी कॉज को मैनेज करेंगे तो फिर B12 मैनेज हो जाएगा बाद में, वरना फिर रिकरेंस हो जाएगा उसका दोबारा। इसमें ख़तरनाक तरीन बात याद रखिएगा सारी सिम्टोमेटोलॉजी में, वो ये है कि प्रोथ्रोम्बोटिक है। होमोसिस्टिन लेवल्स मिथाइल मैलिक एसिड के बढ़ने से पेशेंट को थ्रोम्बोटिक इवेंट होंगे। तो क्या होगा थ्रोम्बोटिक इवेंट से कि चांसेस ऑफ इस्कीमिक हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स के बढ़ जाएंगे, इस्कीमिक किडनी के बढ़ जाएंगे, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, बुट-चियारी सिंड्रोम हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है इसमें। इस वजह से जो है ना, ये इतना आसान ना लें इसको प्लीज़। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो सॉरी कि ये लेक्चर मैंने इसको बेसिक लेकर उठाया है, इसलिए ये लंबा हो गया है। आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द फॉलेट एसिड डेफिशिएंसी, उसको पूरा करेंगे हम पार्ट 2 में इसके। तो वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।